my name is Riya Gupta and welcome to my channel. Today I'm going to share across with you my Instagram story hacks, and I'm going to exactly show you how you can make your Instagram story look really very creative and engaging at the same time. Also, Instagram story is a very important feature which most of us do not leverage it to the fullest. And I'm exactly going to show you in this video how you can make your story really very engaging and beautiful at the same time. So, do subscribe to my channel and also give me a thumbs up. So let's get started. पहली इमेज में आई एम गोइंग टू यूज़ अ पेन आइकन एंड मैं वाइट कलर यूज़ करके उसको और अच्छा लुक एंड फील देने वाली हूँ. फिर मैं वो स्टार आइकन यूज़ करके अ बिट मोर लाइटिंग इफेक्ट एंड अ लाइवली इफेक्ट देने वाली हूँ. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ अनदर कैप्शन एंड आई एम गोइंग टू यूज़ अ कैप्शन इन विच आई कैन शो अ शैडो इफेक्ट. तो मेरा यहाँ पे आई हैव रिटन एज मंडे. अब मंडे को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है टेक्स्ट फॉन्ट साइज में, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द सेम कलर एंड आई am going to put up a color in which my glass is and the coffee is, so that it looks really even and doesn't really stand out. This is the way I am actually creating a shadow effect. You can do it even in a reverse order. It looks really nice, but I wanted to do it this way as it will pop out the image even more. Next, I am going to use again a pen icon and I will be putting up, taking this color drop feature and I'm going to curve it out nicely. Again, I'm going to use the star little feature so that it brighten up. It looks like a nice bright thing which I have put it up. So, to avoid the Monday blues, तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे यहाँ से अच्छे से उनको सजा के so that it really looks quite lively. इसको ऐड करने के लिए मैंने वाइट एडिशन किया है. वाइट विल मोर इट विल लुक लाइक अच्छा पॉप आउट करेगा आपका ये स्टोरी. एंड अभी मैं लिटिल फ्राज ऐड करूँगी. सो दीज आर द वे यू कैन प्ले अराउंड विद योर स्टोरी द वे यू वांट इट टू बी, एंड यहाँ से आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज अच्छे दिखते हैं. नेक्स्ट इज बेसिकली मैं कलर ड्रॉप फीचर विच इज़ अ वेरी गुड फीचर करके मैं पूरा कलर चेंज करती हूँ अपने फीड का. मैं इरेजर यूज़ करके आई एम मेकिंग इट अ सर्कल. Next, I'm going to again make a circle with a black pen and making it focus totally on my face. You can use any other color background you want, lighting it up with these white lights so that it really looks really engaging. You can use any light color you want. So, and again, you can play around with different sizes of the light. You can change with all smaller size. You can again increase it. Now, what I'm going to teach you out here is how you can make it even more attractive by adding अल्फ़ाबेट्स. यहाँ पे जो मैं अल्फ़ाबेट्स ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगी जैसे कोई हैंग कर रहा हो. तो जैसे आप कभी जाते हो जो आपको दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें हैंग करती हैं, तो दिस इज़ अ मोर क्रिएटिव वे. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये तक बताने वाली हूँ कि आप कौन से फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो एंड कैसे यूज़ करना है. सो डू सब्सक्राइब so you'll get to know an update about this. Now, after making it look like this, it looks so attractive. Now the same thing I'm going to do here. I'm using two effects out here. I'm going to rub off everything which is there on my face because the subject should look really very clean. Now after doing that, I'm going to save it. जो भी मैं चेंजेस करने वाली हूँ मैं हर चेंजेस पर सेव करती जाऊँगी. आपको मैं पता चल जाएगा एंड ऑफ दिस वीडियो में ये क्यों कर रही हूँ. अगेन आई एम गोइंग टू सेव इट. अब मैं वापस से इसके पास वही डॉट्स जो हैं, जो ग्लिटरिंग डॉट्स हैं, मैं और बढ़ा दूंगी एंड उसको अच्छा लिट अप, जैसे आप जैसे लाइट्स चालू करते कैसे लगता है एकदम लिट अप टाइप्स. आई एम गोइंग टू मेक इट इवन मोर ब्यूटिफुल बाय पुटिंग इन अनदर कलर टू इट. So this is giving a bit of a contrast thing. I am again saving it. Next, I am again putting even more lights, like everything is lit up and it looks so beautiful. Now, after doing this thing, again I'm going to put even more, a bit saving it, and now I'm going to put the last frame into it that is a bit little less and smaller pink color ones, and this is the last image. After this get downloaded, now you will see how your story would look like. See, again, 1 2 3. This is the last image. What I'm going to do here, I am going to select a classic font and I am going to make it look like a layers to it. I am going to do the same thing again, using it a period sign and then using it a classic font and again making it look like that. Now, to make it even more fancier, put it the dotted lines down. You can even change the color of the dot lines and then making it look like, it's like a full entire picture.
अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग. अब आप डॉट लाइन्स चेंज कर सकते हो. आई रियली लाइक्ड इट दिस वे. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू आप पूरे फॉन्ट्स को अलग कलर में कैसे कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड जस्ट टेक इट बिहाइंड. That's the way it looks so nice, and it looks, your stories are going to look so creative like it was never before. I hope you like it, and so do subscribe.